दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और आज आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ले आ रहा हूँ एड इम्यून की तरफ से, जेफ गैल्विन अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से। और मेरी जो इंटरव्यू हुई जेफ गैल्विन से सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले, वो इस बात पे हुई कि AGT103-T का फेज़ 1B क्लिनिकल ट्रायल क्यों शुरू नहीं हुआ, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। और इसी के बारे में सूचना है। मेरी इंटरव्यू जो है जेफ गैल्विन के साथ वो इंग्लिश में है, लेकिन जो कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स इंग्लिश नहीं जानते, तो मैं उसे हिंदी में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और मेरे हिंदी में बताने के बाद वो ओरिजिनल जो इंग्लिश इंटरव्यू है वो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, जेफ गैल्विन के साथ मेरी बात इसलिए हुई क्योंकि मैंने देखा उनके अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज़ वाले वेबसाइट में एक डोनेशन पेज है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई डोनेशन पेज क्यों ले आए और फेज़ 1B का ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि फंडिंग का प्रॉब्लम है। जो उन्होंने स्पैक मर्जर किया उसमें काफ़ी खर्चे हो गए सिर्फ मर्जर करने में, और उनकी उम्मीद थे कि स्पैक यानी कि एक स्पेशल कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में होती है, और प्राइवेट कंपनी उसके साथ मर्ज होने से वो स्टॉक मार्केट में आ जाएगी और उसको पैसे मिल सकते हैं। तो जेफ गैल्विन ने सोचा कि अगर वो स्पैक 10x नाम की एक स्पैक है उसके साथ मर्ज हो जाए, यानी कि ज्वाइन हो जाए, तो उसको 10x पैसे देगा फेज़ 1B ख़त्म करने के लिए। और फेज़ 1B का ख़त्म होने पर FDA अप्रूवल मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, इसलिए जेफ गैल्विन काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन मर्जर के वजह से जो खर्चा हुई मर्जर को कंप्लीट करने के लिए, उसमें उनके बहुत सारे पैसे चले गए और उनको जितना पैसा मिलना चाहिए था मर्जर के बाद वो नहीं मिला। तो उसकी वजह से वो थोड़े फंस गए हैं फेज़ 1B के ट्रायल शुरू करने के लिए। फंडिंग उनका कम हो गया है, तो इसलिए उन्होंने डोनेशन पेज डाला। तो हमने कहा कि भाई अगर आप वेबसाइट में डोनेशन पेज डालोगे और कोई गलती से आ जाए, देखे डोनेशन पेज, फिर वो सोचे कि ठीक है मैं थोड़ा डोनेट करता हूँ, तो वैसे तो बहुत कम निकलेगा। इसलिए मैं हमारे चैनल में आपको इनवाइट करता हूँ, आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि फेज़ 1B की क्या हालत है और आपका AGT103-T सक्सेस होने के लिए क्या चांसेस है, कैसे है। तो उन्होंने वो पूरी डिटेल इंग्लिश में समझाई है। तो मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जेफ गैल्विन ने ये कहा कि जो उन्होंने ओरिजिनल AGT103 का ट्रायल किया था फेज़ 1 में, उसके 400 दिन के लगभग बाद उन्होंने ATI किया। ATI यानी कि आर्ट बंद करना, यानी कि दवा बंद कर देना। तो जब दवा बंद किया तो वायरस बढ़नी चाहिए, तो वायरस बढ़ने लगी। तो साथ ही साथ उनके अंदर वो जो पुराने AGT103-T के जो सेल्स बचे हुए थे वो भी बढ़ने लगे, CD8 भी बढ़ने लगे, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं बढ़े कि HIV को कंट्रोल में रख सके। HIV का वायरस ज़्यादा जल्दी बढ़ा और ये थोड़ा धीरे से बढ़ा। फिर उन्होंने उनको ART डाल दिया, फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने उनका ART निकाला, और अब की बार जो है CD4 T सेल जो है AGT103 वाला वो बढ़ गया, और CD8 T सेल्स भी बढ़ गए, और वायरस का जो HIV वायरस का जो नंबर्स है वो उतने फास्ट नहीं बढ़े जितने वो पहले बार में हुए थे। तो इन्होंने समझ गए कि ATI जो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट इंटरप्शन, वो तुरंत करनी चाहिए। तो फेज़ 1B में उनका प्लान है कि 24 पेशेंट्स लेंगे और उन 24 पेशेंट को 3 ग्रुप में बांटेंगे। एक ग्रुप को AGT103 देते ही ART बंद कर देंगे और उसका क्या रिएक्शन होता है वो देखेंगे। दूसरे ग्रुप को ART दे के AGT103 दे के 14 दिन के बाद ART बंद करेंगे और उसका क्या रिएक्शन होता है देखेंगे। और तीसरे ग्रुप को AGT103-T दे के 30 दिन के बाद ART बंद करेंगे। तो उनका अनुमान है कि 1 साल, फेज़ 1B शुरू करते ही 1 साल के अंदर उनके पास काफ़ी डेटा मिल जाएगी, जिसके साथ वो FDA के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये अप्रूवल के लायक है कि नहीं। और
इसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने चाहिए फ़ेज़ 1 ट्रायल शुरू करने के लिए। और फ़ेज़ 1 ट्रायल के लिए उनको लगभग $2 मिलियन की कमी है फ़िलहाल। और वो सोच रहे हैं कि अगर डोनर्स लोग कुछ पैसे दे तो उनका जो शॉर्टेज है, $2 मिलियन का शॉर्टेज जो है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अगर पूरा बजट नहीं रहे और क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दे तो जितना पैसा उन्होंने डाला वो वेस्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी का पैसा के बिना ट्रायल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डोनेट पेज आ जाए। तो हमने कहा कि हम हमारे व्यूअर्स को भी बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हमें पूछ रहे हैं कि भाई ये फ़ेज़ 1 भी ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। और तो हम उनको मौका देंगे कि आप ये अपना अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज़ के वेबसाइट में जाइए, डोनर पेज देखिए, और वहाँ पर डिटेल भी है कि किस तरह से रिज़ल्ट आई है एटीआई का, वो भी देखना। और अगर आपका मन करे तो आपसे जो हो सके वो आप वहाँ डोनेट कर सकते हो। और आप जो डोनेट करोगे उसकी वजह से ये फ़ेज़ 1 भी ट्रायल जल्दी शुरू होने की गुंजाइश होगी। और दोस्तों, मैं यहाँ पर निवेश का चैनल चलाता हूँ, शेयर ट्रैक अलग चैनल है जिसमें सिर्फ हम लोग इन्वेस्टमेंट का देखते हैं। तो अब जो है यूएस में ब्याज इतने ज़्यादा है कि लोगों को बॉन्ड, गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसे रखने से काफ़ी ब्याज मिल जाती है रिस्क के बिना। तो शेयर मार्केट में कम पैसे डालते हैं, उसकी वजह से ये जो कंपनीज़ है अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी जैसे, उनमें निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स बहुत कम है। और ये बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है वो उनके हिसाब से चलते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है उसका कितना दिन चल सकता है, और ज़रूरत पड़े तो कंपटीशन का प्रोडक्ट को ले लेंगे। तो इस तरह से वो सोचते हैं और उनका ध्यान रहता है पेटेंट एक्सपायरी के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या है कि AGT103-T जो है वो अभी स्ट्रगल कर रही है थोड़ी फ़ेज़ 1 भी ट्रायल शुरू करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो आप, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी में वो डोनेशन का पेज देखिए, आपसे जो हो सकेगा वो उनको हेल्प कीजिए आपके हिसाब से। और अगर आप हमारे मेंबर हो या आप हमारे पेट्रियन हो तो आप चैनल की फ़िक्र नहीं करना, आप मेंबरशिप बंद कर दीजिए, पेट्रियन भी बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो पैसा जो है अगर आप AGT103 का क्लिनिकल ट्रायल में डालना चाहते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो यही संदेश मुझे आपको देना था। देखिए, ये जो क्लिनिकल ट्रायल है कोई भी ड्रग का, इसमें कोई गारंटी नहीं होता कि सक्सेस होगा कि फेलियर होगा। लेकिन हर एक जो थेरेपी है जिसमें अच्छे रिजल्ट आने की चांस होती है, ज़रूरी ये है कि उसे अंत तक पहुंचाया जाए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ। बाकी आपके हाथ में, आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए। जेफ गैल्विन खुद कह रहे हैं कि कोई HIV पेशेंट्स के पास दवा के लिए पैसे नहीं रहते तो उनके पास से कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। हमें सिर्फ गिने चुने लोग चाहिए जिनके पास पैसे भी हैं और वो दे सकते हैं। तो वो अगर यहाँ पर पैसे दे तो बहुत काम आएगा, सही जगह पर जाएगा। तो ये आप सोच लीजिए। और आप अगर जाके कुछ डोनेट करोगे तो ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने डोनेट किया है, तो हमें पता चले कि हमारे चैनल ने किस तरह से योगदान दिया AGT103-T को। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। लेकिन जाने के पहले जेफ गैल्विन का पूरा इंटरव्यू आपको अगर देखना हो तो वीडियो को चालू रखिए। जय हिंद। Hey all, welcome to Share Trek. This is Raj here. Friends, this is a very important video today, and I hope you would watch this till the end because a cure depends on this. And the main message I have for you is that recently I went into the AdImmune website as always, and I saw there was a donate page. And so I asked Jeff Galvin about the donate page. Why do you have a donate page? And friends, it's true, like I have spoken to you before, that phase 1B trial, you guys have been asking me, why hasn't it started? When is it going to finish? And you were all keen to know why there is so much of a delay. So basically, I have been telling you that it's basically about money. And it seems to be true because you need a certain amount of money in order to start the process and complete the phase 1 trial to the satisfaction of FDA. And I think we have an opportunity to help AdImmune in getting phase 1B started as soon as possible. And to that effect, I think I would like to have Jeff himself explain to you what is happening with AdImmune's donation page, why it is there now. So let me invite Jeff Galvin.
Jeff, thanks for joining us today. Can you please explain to us about the new donate page in AdImmune? Sure. Thanks for having me, Raj. I really appreciate it. Well, as you know, we tried to do a SPAC in 2023, and so we tried to engage with Wall Street to get institutional funding, and I got to say that that did not go that well. We were led to believe that the it was possible for them to complete this D-SPAC, and during that process, they would be raising tens of millions of dollars for us. So my plan had been to spend that to go pedal to metal on the phase 1B, because I'm so excited about the results in the phase 1A and the analytic treatment interruption. But instead what happened is we had huge expenses of the SPAC, and they brought in almost zero money. Now, fortunately, we raised enough money on our own to keep everything going. But at this point, I feel like the 1B has been really slowed down. And I started thinking, okay, who's really passionate about getting this 1B done? It's not Wall Street. It's not the pharma companies. It's us. It's us here at AGT. It's people like you. It's people who are watching your channel. And there's a ton of them. And if you just took the population of people that are living with HIV in the United States, it's over 1 million. If each one of them were to donate $20 to the phase 1B, that would cover the entire cost of the phase 1B from start to finish. Right. And so, there's power in numbers. And of course, not everybody who hears this is going to be inclined to donate. And I totally understand that. And some people don't have 20 bucks who are living with HIV. Okay, but I thought I'd open it up because I know that there's a lot of interest out there, and small donations add up. And if we can get, several $1 million from that, we can dive into the 1B full speed, and we could be seeing results from this next year, even as early as the summer. And Fantastic. so, yeah. So I think that, there's a good reason for everybody to think about this, at least. And so we put the donation page up there, and I really appreciate you, seeing it and asking me about it, and potentially alerting folks to it. Yeah, because our audience has always been asking me, what is happening with AGT103-T? Why is it not moving fast? Why is it not moving fast? And I generally have a feeling when I look at clinical trial companies that it needs a lot of funds. It needs a lot of volunteers so that FDA has got a sample size which is big enough. And that means a lot of money, a lot of expenditure. So now that we know about it, I think our audience will be more than happy to visit the donate page and see what they can do for it, because the earlier it comes, the better. And Jeff, correct me if I'm wrong. I also understand that after more than 400 days, when you did the ATI experiment, which was done earlier this year, you found that AGT103-T had survived for a long period of time without encountering HIV virus, because all those patients were on ART, which is very positive. And then we also found that they multiplied and they increased the CD8 when ATI was done for the second time. So those things make me feel very, very optimistic about the prospects for AGT103-T. So I guess your team might also be very keen to get started and demonstrate proof of that. Oh, absolutely. I mean, obviously you've read the articles, and I hope you'll include the articles maybe in the comments of this, or at least refer people to our website. Adimmune.com has all the information about what you just said. Yes. And I think the results were remarkable. It did show the persistence and durability of those cells, and that even after a long, long time of being unstimulated, and being reduced to very low quantities, they were able to show what looked like an effective immune response against HIV. And the viral suppression after the second treatment interruption was impressive. All of the patients that completed 2 ATIs ended up with viral loads below 25,000 particles per ml. Now, that set points in HIV, when people are off antiretrovirals, are generally much higher than that. So it's a small sample size, but it is really intriguing, and that's the point of the 1B. Right. If we can do 24 patients, that's the plan, in 3 arms, and if we can show statistical power for these same observations, or even a refinement of the protocol that improves
the therapeutic effect, right? Because why wait 490 days to take Right. them off of antiretrovirals? In this next study, we won't do that. We'll do it when they have the maximum number of these supercells in their body. Right. And what we're hoping to see is an even better response. But, you know, you never know it until you get a chance to do the experiment. And, you know, we're really anxious to get going on this. And I think that, you know, your enthusiasm for it has always been helpful. And you know, going out there and publicizing what we're doing, and especially now that you're engaging your audience, I mean, who knows what could happen? This Yeah, might I be think something that would give it great a things could real boost. happen. I hope for Yeah. the best. And I would definitely put the link to your donation page in our description, and also the page where you have all the information about the ATI that you had done, so that our audience can go and have a look. And I have a special request for the audience on behalf of myself and also on behalf of Jeff, that this is a very, very important video, probably the most important video our channel has ever done. I would like each one of you to actually send a link to this video to anyone you know, or any institution you know, where you have a lot of people who are affected by HIV or HIV-related people, so that they all get to see this and they have an opportunity to do a very historic thing to fund part of a clinical trial for a potential functional cure for HIV. It'll be amazing. So that's what I would like to request from you. Jeff, you have anything else you want to tell our audience before we wind up? No, I just want to let you know that you know, we're continuing our passion to pursue a functional cure for HIV, and we think we've made some great progress so far, and we're really encouraged by the data that we've seen. There's still a lot of work to do, but we're committed. That's the key, and potentially with your help, we can keep on putting one foot in front of the other, and even get this from a walk to a run, you know, and get to subsequent results. And if we can show statistical power behind, you know, behind observations we've already made in the phase 1A and the analytic treatment interruption, we may potentially be able to define pivotal endpoints to the FDA, and, you know, for a phase 2 study where they might be inclined. Now, this is all speculative, of course, but you know, So in this does clinical happen trials, in cell therapies. yeah, in clinical trials, you can't guarantee anything. But I have another exciting possibility that I want to tell our audience. Once the phase 1B is started, because of the way it is structured, I think within 6 to 12 months, we would be able to demonstrate all the endpoints, because you're going to have ATI on day 0, ATI on day 14, and ATI on day 30. And if you observe the patients, you already have all the data. So within a matter of 6 months to 1 year, you can package that nicely, validate, repeat anything that you want to do, and you can have a comprehensive set to prove your thing. So that's very exciting, because we don't have any functional cure therapy that close in the market at this point of time in clinical trials. So of course, you can't guarantee that clinical trial will be successful, but you have to try. And this seems like as best an opportunity as ever. That's Yeah, and if you don't mind, I'm going to give a little bit more detail on what you just said. So you're right. We'd be treating patients probably within about 6 months of starting the study, and we'd start to see some data out of that, at least safety data. And remember that we do an initial withdrawal, and we'll see something, but the protocol is set up so that we do an initial withdrawal for 8 weeks, put them back on antiretrovirals, because what we want to do is activate the cells like we learned in the analytic treatment interruption. A short dose of the virus activates the T cells and puts them in an effector state and increases their effect. And so we're going to do a short withdrawal, then 4 weeks back on antiretrovirals, and then a second withdrawal. And we're hoping that everything that we learned from the phase 1 and the analytic treatment interruption is going to lead to an optimized protocol that will get us the best results. And the second figure that you gave of a year is about when we should start seeing the interim data readout. Then we will have collected a full set of data from a number of patients, and we should start seeing some readouts on that. This is all open label, so we don't have to keep it secret. So as soon as we know something, we'll get right back out to you and tell you all about it. Right.
Thanks a lot, Jeff. And again, to our audience, please visit the link in the description. Go to AdImmune, look at the donate page. Also forward this video to your friends who might be interested or who have an interest in HIV, so that they can also consider contributing to this historic event or historic effort to get a functional cure for HIV. Thanks, Jeff. Thanks for coming to us and giving us this message and an opportunity to participate. Thank you, Raj. I appreciate it.